हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन OWS जिसको भी कहते हैं। जो सितंबर में एग्ज़ाम हुए थे उसके उन एग्ज़ाम्स में जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया है वो कर रहे हैं, और ये है पार्ट 1। बहुत सारे क्वेश्चंस थे तो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। ये पार्ट 1 है और आपको पार्ट 2 भी बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। द प्रो ऑफ HDFC बैंक वॉज very skillful in using the mind at negotiating contracts, always securing the best deal for her customer। तो अंडरलाइन वर्ड क्या है? skillful in using mind at negotiating contracts। सबसे पहले ऑप्शंस के मीनिंग देख लेते हैं। inept, inept का क्या मतलब होता है? unskilled, clumsy, unskilled, clumsy। clumsy का क्या मतलब होता है? unskilled, awkward। ये दोनों सिनोनिम हैं, unskilled, awkward। एड्रॉइड, एड्रॉइड का क्या मतलब होता है? स्किल्ड, रिसोर्सफुल, रिसोर्सफुल। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड का मतलब भी होता है अनस्किल्ड। तुम्हारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, एड्रॉइड। स्किल्ड इन यूजिंग द माइंड एट नेगोशिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? एड्रॉइड। सेकेंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द गिवन फ्रेज। द फियर ऑफ स्पाइडर्स। Arachnophobia is fear of spiders, Archophobia, fear of heights, Claustrophobia, fear of confined or closed spaces, Hydrophobia, fear of water, तुम्हारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, arachnophobia। क्वेश्चन नंबर 3, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द गिवन फ्रेज। A person who believes that God, nothing is known or can be known of the existence or nature of God. Ballistic is related to the science of projectiles or missiles. Atheist is a person who does not believe in God existence. A person who does not believe in God existence. Agnostic is a person who believes that nothing is known or can be known of the existence or nature of God। तुम्हारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। Egoistic, a person who is excessively self-centered. A person who is excessively self-centered। Question number 4, given phrase, one word substitution of the given phrase। A person who studies ancient writings and inscriptions। Typographist is a person who is skillful in typing, printing or type design। A person skilled in printing और टाइप डिज़ाइन। नाम से ही पता चल रहा है टाइपो तो कुछ ना कुछ टाइप ही हो रहा होगा। एपिग्राफिस्ट इज अ पर्सन हु स्टडीज एंशियंट राइटिंग्स एंड इंस्क्रिप्शन। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। पॉलीग्राफिस्ट, अ पर्सन हु राइट्स ऑन मैनी सब्जेक्ट्स और यूज अ पॉलीग्राफ। पॉली का मतलब होता है ना बहुत सारे, मतलब मल्टी, तो इसलिए अ पर्सन who writes
on many subjects. Or uses a polygraph. Geographist, a person who studies geography. A person who studies geography. Question number 5. One word substitution of the underlined segment. Finding the people with generation or forgiving gesture, especially towards a rival or less powerful person, is rare today. Generous और forgiving का क्या मतलब है यहाँ पे? Magnanimous, pessimistic, egotistical या vindictive. तो हम सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं. मैग्नानिमस का क्या मतलब? मैग्नानिमस का मतलब होता है जेनरस और फॉरगिविंग नेचर जिसका हो या गेस्चर हो. जेनरस और फॉरगिविंग नेचर या जेस्चर. नेचर जेस्चर. पेसिमिस्टिक, देखो दो वर्ड होते हैं. एक होता है ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी जिसको कहते हैं. पेसिमिस्टिक, निराशावादी. तो यहाँ पे लिखा है पेसिमिस्टिक. तो पेसिमिस्टिक है हैविंग अ नेगेटिव और होपलेस एटीट्यूड. हैविंग अ नेगेटिव और होपलेस एटीट्यूड. इगोस्टिकल का क्या मतलब है? वही सेल्फ सेंटर्ड और एक्सेसिवली प्राउड ऑफ वन सेल्फ. सेल्फ सेंटर्ड, ये ऊपर भी यूज़ हुआ है. सेंटर्ड और एक्सेसिवली प्राउड ऑफ वन सेल्फ. Vindictive, having or showing a strong desire for revenge. Having or showing a strong desire of revenge. Sixth, in the sentence, Sherlock Holmes relied on his ability to understand something immediately without the need for conscious reasoning to reveal the most baffling mysteries. Which option is best? One word substitution for the underlined phrase. तो क्या है? Ability to understand something immediately without the need for conscious reasoning. Cognition, logic, intuition, perception. मीनिंग देख लेते हैं इनके. है कॉग्निशन का क्या मतलब होता है? तो कॉग्निशन का मतलब होता है द मेंटल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग knowledge and understanding through thought and experience. The mental process of acquiring knowledge and understanding through thought or experience. लॉजिक क्या होता है? रीजनिंग कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल. रीजनिंग कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल. इंट्यूशन होता है जब हमारे को वही द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग इमीडिएटली विदाउट द नीड फॉर कॉन्शियस रीजनिंग. एकदम से इंट्यूशन आ जाता है कि ऐसा नहीं ऐसा होगा. तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. फोर्थ, परसेप्शन द वे यू इंटरप्रेट और बिकम अवेयर ऑफ समथिंग थ्रू द सेंसेस.
The way you become aware of something through the senses. Seventh, one word substitution of the given group of words. A large quantity of something that falls or hangs down. Sluice, gorge, कैटरैक्ट या कास्केड. देखो स्ल्यूज का क्या मतलब होता है? अ चैनल फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ वाटर. अ चैनल फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ वाटर. जॉर्ज, a narrow valley between hills or mountain. A narrow valley between hills or mountain. Cataract is a large waterfall, but it's usually used for a powerful or roaring waterfall. Cataract, a large waterfall, but it's usually used for a powerful or roaring waterfall. Or cascade is a large quantity of water that falls or hangs down. तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. एट इज select the option that can be used for the given group of words. A place where wild animals live or a place where a person hides. तो arboreal, बायर, जू या लेयर. हम इनके मीनिंग्स देख लेते हैं फटाफट. arboreal का क्या मतलब होता है? लिविंग इन ट्रीज, यूजुअली मतलब यूज्ड फॉर एनिमल्स लाइक मोंकी. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ लिविंग इन ट्रीज. बायर, काउशेड. जू, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट फॉर पब्लिक डिस्प्ले. जू का मतलब, जू तो सभी ने ही देखा होगा और उसका मतलब भी पता ही होगा. अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट फॉर पब्लिक display. Lair is a den or resting place of a wild animal. A den or resting place of a wild animal. तुम्हारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. 9th, criticizing the people in a humorous way. Satire, irony, adulation या sarcasm. तो satire का क्या मतलब होता है? criticizing people in a humorous way. Criticizing people in a humorous way. Irony is saying the opposite of what one means to create humor or emphasize a point. Saying the opposite of what one means to create humor or emphasize
अ पॉइंट। देखो मैं इसका आपको एक एग्जांपल देती हूँ। 9th या 10th में एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम तो नहीं याद आ रहा है, बट उसमें था कि 100th लॉयन से किंग की डेथ होगी। तो जो वैद्य आते हैं वो कहते हैं कि ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा बट हम किंग को बचा नहीं पाए। तो ये एक आयरनी है, ठीक है। एड्यूलेशन, एड्यूलेशन का क्या मतलब होता है? एक्सेसिव प्रेज, सिर्फ प्रेज। सरकेज़म, मॉकिंग और कटिंग रिमार्क्स मीन टू हर्ट समवन। मॉकिंग और कटिंग remarks mean to hurt someone। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, satire। 10th, one word substitution of the given words। One who has keen interest in eating high quality food and drinks। ventriloquist, minimalist, misandrist, gourmet। तो हम मिनिमलिस्ट, सॉरी, ventriloquist का क्या मतलब है? A person who can speak in a way that the voice seems to come from somewhere else। A person who can speak in a way that the voice seems to come from somewhere else। Minimalist, a person who prefers simplicity and minimal possessions। A person who prefer simplicity and minimal possession। मिसएंड्रिस्ट, मिसएंड्रिस्ट का क्या मतलब है? अ वुमन हु डिसलाइक और हेट मैन। अ वुमन, वीमेन who dislike or hates man। Gourmet, gourmet is one who has keen interest in eating high quality of foods and drinks। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे बस eating high quality food and drinks। हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 11th, a person who brings a lawsuit against someone in a court of law। प्रोसिक्यूटर, प्लेंटिफ, डिफेंडर या आर्बिट्रेटर। तो प्रोसिक्यूटर कौन होता है? a legal representative who a conducts a case against someone accused of a crime on behalf of the state। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, a legal representative who conducts a case against someone accused of a crime on behalf of the state। of a state। plaintiff, plaintiff कौन होता है? a person who brings a lawsuit against someone in a court of law।
to brings a lawsuit against someone in a court of law. Defender जो defend करे, the person against whom a case is brought, a person against whom a case is brought. Arbitrator, a natural person who settles a dispute outside the court. A neutral person, natural गलती से बोल दिया, a neutral person who settles a dispute outside the court, outside of court. तो हमारा आंसर क्या हो गया? प्लेंटिफ. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. 12th, renounce or reject someone desired or valuable. Reiterate, homologate, abnegate या galvanize. तो reiterate का क्या मतलब होता है? To say or do something again. To say or do something again. Homologate, to approve or confirms officially. To approve or confirm officially. Abnegate, abnegate का क्या मतलब होता है? To renounce or reject something desired or valued such as pleasure, rights or belief. तो मैं लिख देती हूँ बस to renounce or reject. Renounce or reject. हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. गैल्वनाइज का क्या मतलब होता है? टू शॉक और एक्साइट समवन इनटू टेकिंग एक्शन. टू शॉक और excite someone into taking action. 13th आंसर बता दिया ना मैंने. Select the option that can one word substitute a given group of words. A place where weapons or ammunitions are stored. Arsenal, archives, museum या barracks. तो आंसर क्या हो गया हमारा? पहले मीनिंग्स देख लेते हैं. Arsenal, arsenal stored or made. Arsenal stored or made. मैंने यहाँ पे stored और made इसलिए लिख दिया क्योंकि इसके आगे ये पूरी लाइन है ना. प्लेस वेयर वेपन्स एंड एम्यूनेशंस आर स्टोर्ड और मेड. तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. आर्चीव्स, a place where historical documents or records are kept. A place where historical documents or records are kept. Museum, a place where objects of historical, scientific or artistic interest are displayed. A place where objects of historical, scientific or artistic interest
are displayed. Barracks, buildings used to house soldiers. तो हमारा आंसर हाँ ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. 14th, to change something slightly, especially because it is not the right position. Adjust, disarrange, stabilize या complicate. तो adjust का क्या मतलब होता है कि हमारे को किसी चीज़ को एडजस्ट करना हो उस प्लेस में रखने के लिए. तो यही है टू चेंज समथिंग स्लाइटली स्पेशली बिकॉज इट इज़ नॉट इन द राइट पोजिशन. आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर. डिसअरेंज का मतलब देख लेते हैं. डिसअरेंज का क्या मतलब होता है? टू मेक समथिंग अनटाइडी और डिसऑर्डर. To make something untidy or disorder. Stabilize, to make something steady or unlikely to change suddenly. To make something steady or unlikely to change suddenly. कॉम्प्लिकेट, कॉम्प्लिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को और डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स बनाना. टू मेक समथिंग more difficult or complex. Or complex. 15th, one word substitution of the underlined word. The scientist's explanation was so clear and easy to understand that even those without a background in the subject could grasp the concept. His ability to break down complex ideas into simple terms made the lecture highly appreciated by all attendees. तो lucid, vague, ambiguous या convoluted. तो lucid का क्या मतलब होता है? So clear and easy to understand. So clear and easy to understand. Vague, unclear or not specific. Unclear or not specific. Ambiguous, having more than one possible meaning, means unclear. तो ये दोनों सिनोनिम हो गए. Having more than one possible meaning. Unclear. Convoluted. Convoluted is extremely complex or difficult to follow. Extremely complex or difficult to follow. तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. ल्यूसिड. 16th, someone living outside their native country. Someone living outside their native country. Expatriate, foreigner, fanatic या alien. तो expatriate का क्या मतलब होता है? Someone living outside their native country. तो ये मैं ऐसे कर देती हूँ. Often for work or personal reason. यहाँ कोमा डाल के लिख देती हूँ. Often for work or personal reason. तो क्या हो गया? एक्सपेट्रिएट का क्या मतलब? समवन लिविंग आउटसाइड देयर नेटिव कंट्री ऑफन फॉर वर्क और पर्सनल रीजन.
Foreigner, a person belonging to other country but not necessarily living outside their own country. A person belonging to another country but not necessarily living outside their own. Fanatic, a person filled with excessive enthusiasm, especially for religion or politics. A person filled with excessive enthusiasm, especially for religion or politics. Alien. Alien is a person from another country, often used in a legal or extraterritorial sense. A person from another country. और एलियन हम कब यूज़ करते हैं? ऑफन यूज्ड in a legal or extraterritorial terrestrial sense. 17th, पूरे पैराग्राफ के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन पैराग्राफ. अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न विद द नेचर, सोर्स, स्कोप एंड वैलिडिटी ऑफ नॉलेज. इट एक्सप्लोर्स फंडामेंटल क्वेश्चंस सच एज व्हाट नॉलेज इज, how it is acquired, and what justifies belief. It examines the difference between belief and truth and how we can know what we claim to know. तो metaphysics, phenomenology, ontology या epistemology. तो metaphysics क्या होता है? यहाँ पे हम देख लेते हैं. Metaphysics is deals with the fundamental nature of reality, existence, and the universe. Metaphysics is deals with the fundamental nature of reality, existence, and the universe. Phenomenology is study structure of consciousness as experienced from the first person's perspective. Studies structure of consciousness as experienced from the first person perspective. Ontology is, what is ontology? Ontology is study of being, existence, and the categories of being. Studies of being. ये तो कौन है? Existence,
and the categories of being. And epistemology is a branch of philosophy concerned with the nature, scope and validity of knowledge. तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, एपिस्टेमोलॉजी। 18th पूरे पैराग्राफ का है। अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट फोकस ऑन द स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ conscious experience from the first person point of view. It examines how individuals perceive, interpret and give meaning of their experience. Founded by Edmund Husserl, it seeks to describe things as they appear to consciousness without preconceived theories or assumptions. तो हमारे को आंसर इससे देखो, इससे पहले ही हमने पढ़ा है phenomenology is study structure of consciousness as experience from the first person's perspective or point of view. तो हमारा आंसर क्या हो गया? phenomenology. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। एक्सियोलॉजी, एक्सियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ वैल्यूज इंक्लूडिंग एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। स्टडी ऑफ वैल्यूज इंक्लूडिंग ethics or aesthetics. And phenomenology is concise experience from the first person point of view. Aesthetics, aesthetic is branch of philosophy concerned with beauty of art. Branch of philosophy concerned with beauty of art. Epistemology is study of knowledge, its nature, sources and validity. Study of knowledge, its nature, source and validity. 19th, her breathtaking performance left an unforgettable and lasting mark on everyone in attendance, captivating the audience so completely that her exceptional talent would be cherished and remarked for many years to come. With the impact of her artistry resonating well beyond the evening and ensuring her legacy in their minds. तो हमारे को मतलब वर्ड बताना है एक इसका। अनफॉरगेटेबल एंड लास्टिंग मार्क, इंडेलिबल, इनडिफिजिबल, इनडिविजिबल और इनएडिबल। इनएडिबल मतलब जो खाने योग्य ना हो, इनडिविजिबल जिसको सेपरेट और डिवाइड नहीं कर सकते हो तो हम इंडेलिबल। इंडेलिबल इज lasting impression that cannot be forgot or removed. Lasting impression that can't be forgotten or removed. Indivisible, defeasible. Indefeasible cannot be annulled, void or undone. Usually used in legal or formal contexts. Can't be annulled, voided or undone. Usually used in legal or formal contexts. Indivisible cannot be
divided or separated. Can't, क्या लिखा जा रहा है? Can't be divided or separated. Inedible, not fit to eat. Can't be eat. Not fit to eat. तुम्हारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 20th, इस वीडियो में हम 20 ही कर लेते हैं और जो बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, फिर चाहे उसमें 30 हो 35 हो, इतने तो होंगे ही, मिनिमम आप 30 मान के चलिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द हाईलाइटेड सेगमेंट क्या है? स्टडी एंड साइंस ऑफ मेजरिंग टाइम एक्यूरेटली। हॉर्मोलॉजी, एथिमोलॉजी, कार्टोलॉजी या क्रोनोलॉजी। देखो, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है सीरियल वाइज, जो काम पहले है उसको पहले करना, फिर उसके बाद को बाद ऐसे। तो होरोलॉजी, होरोलॉजी का क्या मतलब होता है? स्टडी ऑफ साइंस ऑफ मेजरिंग टाइम एक्यूरेटली। स्टडी ऑफ साइंस ऑफ मेजरिंग टाइम accurately. Etymology is the study of the origin and history of words. Study of origin or history of words. Cartography, science and practice of making maps. Science and practice of making maps. Chronology, arrangement of events in the order they occurred. Arrangement of events in the order they occurred. आई होप आपको ये 20 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।